हे गाइस, क्या चल रहा है? व्हाट इज अप? ओके गाइस, सो वेलकम टू दिस यूट्यूब लाइव। अब आई नो मैंने बहुत रैंडम इसको एंड में किया है, पहले शेड्यूल नहीं किया था आपके लिए। इफ यू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस यू कैन। और थोड़ा यार आई एम एक्चुअली हर्ट अबाउट दिस न्यूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हर्ट क्या मतलब, टू हियर दिस अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी ना, मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है, फाइन लग रहा है। इसलिए आप देखो, मैं स्टूडियो में भी नहीं हूँ। आई एम राइट नाउ एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो आई एम इन मुंबई। तो वी हैड कम हियर फॉर सीएफए इवेंट, बट उसके हम अपडेट्स आपको बाद में देंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट द सीएफए इवेंट। नाउ कमिंग टू द रॉबर्ट कियोसाकी टॉपिक इज दैट क्या हो रहा है, मतलब इट्स वियर्ड। ठीक है, रॉबिन कियोसाकी आप देखोगे ना स्टार्टिंग से इनका, एंड जो मैंने ऑब्जर्व स्पेसिफिकली किया है कि फॉर द बेटर पार्ट ऑफ अ डेकेड, है ना, ही हैज बीन वियर्ड। वियर्ड इज द वर्ड। मतलब बड़ी इनके अजीब अजीब लॉजिक होते हैं। लेकिन नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी डेट का बढ़ गया, बट पहले से यार, इफ यू थिंक दैट ही इज टॉकिंग कि डॉलर बेकार है, डॉलर इज कंट्रोल, स्टॉक मार्केट क्रैश, मतलब फॉर आई थिंक more than 5-6 years I can remember, he's always been a pessimistic on stock markets. The only thing he wants to buy is real estate, and the only thing he wants to buy is gold and silver. ठीक है, एंड हाँ, एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी फाइल ठीक भी है, बट इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना जरूरी थोड़ी है यार। मतलब आई टेल यू बताऊं व्हाट रॉबर्ट कियोसाकी हैज बीन इन फाइनेंस फॉर द बेटर हाफ ऑफ अ डेकेड इज, जो फाइनेंस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिलीव करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो होती हैं जो होता है ना कि कोविड हुआ ही नहीं था, कोरोना वायरस वाज फेक, कुछ लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं। सम सेक्शन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एक्चुअली बिलीव, अमेरिका में तो बड़ा कॉमन बिलीफ है कि कोविड था ही नहीं, गवर्नमेंट की चलती, राइट। फिर सम पीपल बिलीव दैट 9/11 जो अटैक हुआ था दैट वाज गवर्नमेंट ओरिएंटेड। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी फाइल इतनी थ्योरीज इतनी बढ़ जाती है, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अर्थ इज फ्लैट, है ना। तो उसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है that dollar is controlled, the Illuminati is controlling the entire world economy. I don't know Illuminati are there, but Matrix में हम फंसे हुए हैं, अगर आपने ऐसे कंट्रोवर्सी सुनी होंगी तो। सब कंट्रोवर्सी रॉन्ग वर्ड, ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। I think Warren Buffett is that of finance. Sorry, Robert Kiyosaki is that of finance, and it is weird. मतलब borderline. I personally find कभी कभी ना, just relax. तो ये होता है, I'll show you, यहाँ पे आइए, I'll show you, and thank you so much for the hearts देते रहो यार, आ जाओ, I'll show you PPT यार। Let's talk about Robert Kiyosaki, because honestly speaking ना यार, Robert Kiyosaki has a very major role in my life. मतलब I really admire him। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी की बात करते हैं। ही इज अ ऑथर, ही इज एवरीवेयर। मतलब रिच डैड पुअर डैड की बात करो, ये बुक इज सिनोनिमस विद फाइनेंशियल फ्रीडम इन अ कंट्री। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड फन फैक्ट कुछ देशों में एक्चुअली बैंड है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड डूइंग दिस। और अब देखो रिच डैड पुअर डैड एमएलएम वाले यार, अब मल्टी लेवल मार्केटिंग देखो, दोस पीपल स्टार्ट विद रिच डैड पुअर डैड। एमएलएम का इतना ज्यादा रिच डैड पुअर चलता है कि यू हैव टू मेक अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यू हैव टू मेक अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। पहले आप सैलरीड होते हो, फिर एम्प्लॉय बनते हो। मेजर, if you just do a quick recap of Robert Kiyosaki. रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानीज अमेरिकन है। 8 अप्रैल 1947 को बॉर्न हुए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज खोली। ठीक है, रिच ग्लोबल एलएलसी खोली थी। ठीक है, फिर द रिच डैड प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खोली थी। एंड आई डोंट थिंक ही इज बीन अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। सबसे पहली चीज, उनकी कंपनीज हैव नॉट डन वेल, बट रिच डैड पुअर डैड बुक तो कमाल दिया। Read this. Robert Kiyosaki is the author of more than 26 books, out of which his book named Rich Dad Poor Dad was translated in 51 languages. Rich Dad Poor Dad was the cultural shift. और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैंने याद है 8th में रिच डैड पुअर डैड में मैंने ऐसे लिखा हुआ था। 8th is 2008, जब मैं 2008 में था। आई एम नॉट इवन जोकिंग। और सड़कों में रिच डैड पुअर डैड समय दिखने लग गई थी, वो जो होते हैं ना दिल्ली रोड में आपको रोकते हैं, रिच डैड पुअर डैड। एंड स्टिल इज सो रेलेवेंट, दैट बुक इज सो ब्यूटीफुल, because I feel कि that book explains finance as a story, as a rich dad poor dad, not on data and facts. So I think he was a great storyteller, Warren Buffett in that book. Sorry, Robert Kiyosaki in that book. If you agree to that, rich dad poor dad, give heart, right? So अगर Robert Kiyosaki question doesn't mean the book is bad. The book तो भाई देखो special है, and it is loved all over the world. जिसको भी finance में interest है, the first stepping stone for most of them would be rich dad poor dad. ठीक है? So that what has been Robert Kiyosaki. अब कंपनीज की बात करें तो रॉबर्ट कियोसाकी अगेन हैज बीन इन अ लॉट ऑफ कंपनीज। ऐसा नहीं है, जैसे आई जस्ट शो यू हियर। ठीक है, अर्लियर ही स्टार्टेड एक्सेलरेटेड लर्निंग, देन ही स्टार्टेड द रिच डैड पुअर डैड था ही, फिर एक कंपनी कैश फ्लो भी की थी। एंड एज अ बिजनेसमैन ही इज नॉट दैट ग्रेट एक्चुअली। आप देखोगे आगे, चेक दिस आउट। एज अ बिजनेसमैन most of his businesses have gone bankrupt.
ठीक है. Rippers bankruptcy. Robert Kiyosaki started a company called Rippers in 1947. ये देखिए, just read this. 1947 में कंपनी थी which sold nylon and velcro wallets. ये रिचर्ड पोर्टार्ड में इसके बारे में पढ़ते हैं. It was a novel concept where these wallets were the first of the kind. Debuted in Success magazine, Runners World Network. The company ended up going bankrupt thanks to stiff overseas competition. Right? So Velcro wallet company, with this company tried to partner with the competition instead, work together and try to achieve this. Ultimately resulted in the same outcome. The company went bankrupt as well. And by the way, Warren Buffett has an institute where they teach entrepreneurship, where they teach finance. Right? फिर Rich Global LLC bankruptcy, as you can see, went bankrupt in 2012. The company bankrupt हो गई थी, and the company was ordered to pay around 24 million to Learning NX, which they did not have funds for. The Learning NX is reported to have an agreement with Kiyosaki with the exchange for booking him for speaking engagements, promotion in his book with the Learning MX percentage of profits. And if you can see here, रॉबर्ट कियोसाकी इज आल्सो फेस. अगर आप देखो ना बीच में सीन 2015, और आप उसको एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको जेन्युइन देखना. 2015 में आप देखोगे रॉबर्ट कियोसाकी वाज इन एवरी यूट्यूब चैनल एंड यूएस स्पेसिफिकली हर यूएस यूट्यूब चैनल में थे. एंड दोस चैनल्स व्हिच आर एट 50K 100K विद ऑल दोस रिस्पेक्ट. बट यार रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ऊपर है यार. रॉबर्ट कियोसाकी राइट. एंड वो उन चैनल्स पे भी आता बिकॉज ऑफ दिस ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपीरियंसेस. और तभी से ना 2012 से इनकी रेपुटेशन वो रियली बैड बिकॉज इतनी पब्लिक स्पीकिंग के बाद ही स्टार्टेड टॉकिंग कि डॉलर कंट्रोल्ड है, ये वो है, सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करो. स्टॉक मार्केट उनके हिसाब से बर्बाद है. राइट. ही इज ऑलवेज बीन स्टॉक मार्केट बेकार, स्टॉक मार्केट बेकार. 5-6 साल से यही बोलते रहे हैं स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गए. दिस इज वन मेजर थिंग आई हैव. आई डोंट बिलीव हिज व्यूज. वी हैव डिफरेंट ओपिनियन. क्यों मैं बता रहा हूँ. वॉरेन बफेट का पॉइंट कहाँ जाता है. वो बेसिकली बोल रहे हैं कि यार जो इन 1971 एक वो एग्रीमेंट हुआ था, द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट. पहले क्या था, जितना गोल्ड है उतना यार डॉलर प्रिंट करोगे, सो दैट गोल्ड इज बैक्ड अप बाय डॉलर. फिर बाद में 1970 स्टार्ट है कि डॉलर इंडिपेंडेंट है, डॉलर को जितना छापना है छापो, फेड डिसाइड करता है. अब रॉबर्ट कियोसाकी पॉइंट सही है. अब फेड डिसाइड कर रहा है, इट्स पेपर, इट्स गॉट जीरो वैल्यू. तुम बोल रहे हो इसी वैल्यू में हम क्यों मांग के बैठ जाए. और जिस दिन सबने इसको मान लिया किसी वैल्यू नहीं है तो डॉलर खत्म. मेजर प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई वॉरेन बफेट बिलीव्स इन सिल्वर, ही बिलीव्स इन गोल्ड. आई एग्री यार, बट ये बहुत ही बड़ी चीज है कि यू जस्ट लीव मनी. अब या तो ये ऑनेस्टली मुझे लगता है या तो मेरी सोच के बाहर है. आई कांट इवन इमेजिन टू दैट एक्सटेंट. इफ यू आर विद मी तो कमेंट बॉक्स में हार्ट दे देना. इमेजिन टू दैट एक्सटेंट. शायद मैं इतना, मेरा हाई विजन नहीं है कि मैं वहां नहीं देख पा रहा हूँ. आई टेक दैट एज अ पॉसिबिलिटी, बट फॉर मी इट इज गुड. क्योंकि मेरे लिए क्या है यार, यू बाई गुड कंपनीज. आप अच्छी कंपनीज लोगे, उन धंधों की तो वैल्यू बढ़ेगी ना, उनकी तो इंट्रिंसिक वैल्यू. जब धंधे बिजनेस अच्छा करेंगे तो उसका पे आउट है रुपी में होगा, डॉलर में होगा, क्रिप्टो में हो जाएगा शायद, या फिर उसमें हो जाएगा गोल्ड में. इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर. राइट. वैल्यू बढ़नी चाहिए तो उसकी करेंसी को सोच मिल जाएगी. एंड दैट इज माय लॉजिक बिहाइंड इट. एंड रीड दिस एक बार ना. आई वांट यू लिसन टू दिस. एक बार ये सुनो यार. आई जस्ट शेयर स्क्रीन विद यू. रीड दिस. लिसन टू दिस. Today, I own about 12,000 rental units. How did I acquire those property? I used debt. You see, the more debt I use, the more property I own, the less tax I pay. And if you think paying taxes is legal, tax is a Marxist idea. I hate this. And people say, well, you should pay taxes. No, we shouldn't. What Marx says is that a progressive and oppressive income tax is essential for the spread of communism. That was in 1848. The facts are America was founded as a tax-free nation. It was called the Boston Tea Party. And we were tax-free for all of these years until 1913 when the Fed was created. The same year, guess what else was created? The IRS. And ever since then, we're paying taxes. So guys like me pay no taxes legally, but the more harder you work, the more money you make, the higher taxes you pay. If that's not communism, what is? And I think complicate मत करो. वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले US was made on the belief of no taxes. फिर टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया. And he thinks ये what he's saying now, वॉरेन बफेट, lot of people, sorry, मैं वॉरेन बफेट क्यों बार-बार बोल रहा हूँ यार. रॉबर्ट कियोसाकी, what Robert Kyosaki is saying is a lot of people would agree with him. ठीक है. And he is coming from some kind of logic. तो ऐसा नहीं है कि he is illogical or you might think he is, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बड़े कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में आता है. इतना लॉन्ग है कि उस समय ये होता था, फिर ये चेंज हो गया, अब वी आर हियर. अब शायद यार मेरे में इतना लॉन्ग मुझे नहीं है, वेरी गुड हो सकता है आप में नहीं होता, में है. बट फॉर मी इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस इज फार बेटर. इफ यू एग्री विद मी, शो हार्ट्स. इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बिकॉज दिस समथिंग वी हैव टू डिस्कस. एंड आई रियली डोंट
think that this makes much sense. ठीक है, on the risk of sounding at a position that you might think कि अच्छा you're challenging Robert Kiyosaki, or on the risk of sounding to try to saving someone that you already think has lost it. A lot of people think on the internet Robert Kiyosaki has lost it. अगर आप बहुत फाइनेंस के उनके पास जाओगे ना, जो फाइनेंस enthusiasts हैं, जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स बोलते हैं, a lot of them have a very very negative opinion of Robert Kiyosaki. मतलब they think Robert Kiyosaki is a joker for them. Right? अब आइए सर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. So Robert Kiyosaki logic क्या है? See this. He said, I am billion to in debt. I use debt money. I don't save cash. If I don't pay the bank goes bust. Not my problem. Basically वो ये बोल रहे हैं, लोग लोन क्यों लेते हैं? गाड़ियों के लिए, लाइबिलिटी से लोग लोन लेते हैं. ठीक है, तो EMI भी बढ़ रही है एंड उनकी एसेट की वैल्यू भी गिर रही है, जो एसेट था भी फ्रिज वगैरह. बट ठीक है, ही सेज कि देखो यार, मैं जब मर्सिडीज रोल्स खरीद रहा हूँ वो फुल्ली पेड होता है, वो फुल्ली पेड है. मैं क्या करता हूँ सर, अगर मैं खरीदूंगा आपकी, इफ आई बाय रियल एस्टेट, दैट विल बी ऑन लोन. इफ आई बाय अ कार, दैट विल बी फुल्ली पेड. तो जो भी एसेट्स हैं जिनकी इनकम बढ़ेगी उनको लोन पे लेते हैं, एंड ही डजंट सेव कैश. लॉजिक क्या है कि लोन पे ले रहे हो तो वो तो वैसे ही बढ़ रहा है, और बैंक कैन नेवर डिक्लेयर द लोन एन एनपीए बिकॉज बैंक का दिखाना पड़ेगा, बिकॉज रॉबर्ट क्यूसाकी इज टेकिंग सो मच लोन. एंड ही सेज डेट को ऐसे यूज करो, और इस चक्कर में तुम्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज अगर तुम पे डेट इतना ज्यादा है, टैक्स लेविस मिल जाती है. एंड दिस इज व्हाट रॉबर्ट क्यूसाकी इज प्लेइंग एट. अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये तो अभी नया मार्केटिंग टूल आ गया रॉबर्ट क्यूसाकी सर का, पहले ये था, अब वो ऐसे डेट हो गया तो अब उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं. That could be true, this could be true, I don't know. जब तक रेगुलेटरी बॉडी या कुछ ऑफिशियल हमें नहीं मिलता, we cannot decide. But हाँ, एक पॉइंट में जैसे it's like rent versus buying a house. On Excel sheet, renting house will always win. But it is not always, all the decisions are not only made on Excel sheet, right? They cannot be made on Excel sheet. बहुत emotional factors भी होते हैं. So for me, तो would I do this? No. Would I take this much of debt and legal liability and buy assets and try to beat the matrix? No. I won't at all. ठीक है? And मुझे खुद ना बड़ा, I'm feeling very weird, but I'm not feeling, कैसे बताऊँ मैं, it's a feeling of confusion, मतलब happy नहीं, मतलब irritation also, sad also. It's weird feeling to see Robert Kiyosaki in this situation. बहुत weird feeling है. और 5-6 साल पहले से इसलिए यार बहुत टेंशन में रिव्यूज देखने बंद कर दिया था कंप्लीटली. अभी तक कि कैश मत सेव करो, वही जो मैं आपको बताता रही दिस. इंस्टेड ऑफ relying on cash, is my screen sharing? Yes. Instead of relying on cash, Kiyosaki advocates for investing in tangible assets like gold and silver. Precious metals are often considered a hedge against inflation, currency devaluation. In this way, he suggests shift from conventional savings to assets में बेटर विस्टैंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज. वही चीज़ है कि भाई गोल्ड लो, फेड पैसा प्रिंट करती है, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं. अब आता है रॉबर्ट कियोसाकी फ्रॉड. आई डोंट थिंक सो. सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड दिस, फाइनेंस ना, स्टॉक मार्केट एक आर्ट है, ठीक है? इट्स नॉट अ साइंस कि ये है तो ये है, इट्स आर्ट. आर्ट में कोई लॉजिक नहीं होता भाई, एंड नाइदर वी कैन फाइंड एनी लॉजिक, राइट? सो एंड आई डोंट थिंक वी शुड कॉल हिम अ फ्रॉड, आई डोंट थिंक वी शुड कॉल हिम अ स्कैमस्टर, बिल्कुल भी नहीं. बहुत जल्दी we put in buckets. If you agree with me, तो yes करके comment box में देना. And let's wait for some authority to come. Let's wait for some clarity to come, right? And दूसरी चीज ये भी है कि if you may or may not agree with what he's saying, I personally do not, but I still respect him a lot. I respect him a lot, and I will always respect him a lot, because that product really gave me a different vision, and I think it helped so many people. That book changed cultures. It changed cultures. The fact of the matter is this. And that's it, yeah. This is all about Robert Kiyosaki. काफी वीडियो ऐसी है कि सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? और हम लाइव आने वाले हैं, दूसरे सेशन में भी बात करेंगे. सो स्टे ट्यून रहना, एंड कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज योर टेक ऑन रॉबर्ट कियोसाकी. बाय गाइस.